and here I am with another video which is all about summer friendly makeup. So let's start the video. So I have started with concealing part. Basically what I am doing right now is color correcting all my pigmentation in darker area. I am using this KRYLON corrector which is gonna cover all the darker areas. So now I'm using this MAYBLLINE concealer just to cover that orange concealing part that I have done. I'm gonna blend it really well. After this, I'm gonna use foundation all over my face. So now I'm using this MAYBLLINE foundation and मैंने इसमें थोड़ा सा LA Girl का फाउंडेशन भी यूज़ किया है. MAYBLLINE फाउंडेशन इज़ बेसिकली अ मैट फाउंडेशन जो समर फ्रेंडली है एंड वो बाद में ऑयली या ग्रे नहीं पड़ता बेसिकली. आप बिकॉज समर में प्रॉब्लम यही आती है कि ऑयली स्किन होने की वजह से हमारा जो फाउंडेशन होता है वो ग्रे पड़ जाता है. तो इसमें मैंने थोड़ा सा LA Girl का फाउंडेशन यूज़ किया है टू गिव दैट ग्लॉसी शाइन, बिकॉज LA Girl के फाउंडेशन में आपका वो ग्लॉसी शाइन हल्का सा रहता है. So I'm blending it all over. Blending is the key basically. So again I'm using this concealer from MAYBLLINE only because I have very intense dark circles. So मुझे उसको कवर करने में काफ़ी मेहनत लगती है. आइज़ के नीचे बेसिकली हमें जो थोड़ा सा एक ब्राइटन लुक देने के लिए भी जो हमारा फेस थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सके, इसलिए भी मैं एक लाइटर फाउंडेशन यूज़ कर रहा था. Compact all over my face. Again I'm using the MAYBLLINE product. I really like MAYBLLINE products. Basically it's budget friendly, it's nice, I really like it. Now I'm just grooming my brows, little bit of shaping and correcting, filling all the gaps. आइज़ के साथ मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली. आई एम जस्ट यूजिंग दिस ट्रांजिशन शेड जो मैं ऑल ओवर अपना एक क्रीज क्रिएट कर रही हूँ. जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ क्रीज एंड ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर एंड इन बिटवीन इन माई सॉकेट एरिया आई एम जस्ट यूजिंग अ लाइटर शेड जस्ट टू गिव अ रिफ्लेक्शन. नॉट डूइंग टू मच विद माई आईज. Basically I'm not going to use this lipstick as a lipstick, I'm going to use it as a blush on and it's my favorite color. Now I am using this super stay matting from MAYBLLINE. It's a very nice lipstick and it stays really well, and I'm using this nude shade. I don't know the number exactly, but it's a really nice shade. I've used 2 lipsticks just to give that warm. Basically I'm using this Wet n Wild mascara. Basically it's a lengthening mascara and I'm not using false lashes this time because मुझे एक वो summer vibe रखना. I don't want to make it fake or something like that people and girls can use
girls can carry very easily. So now I'm gonna finish it off with highlighting and contouring my face. So here is the final look. It's all about the summer vibes and what you can easily carry in summertime. I hope you really enjoyed watching this video. If you did, make sure to like, comment, subscribe to this channel and don't forget to share it with your friends. Thank you so much for watching this video.